Hello guys, my name is Johar Ali, Director at Global Education and Immigration Consultant. First of all, thank you so very much for choosing us and giving us this opportunity to serve you in making your dream come true, to go abroad and make a bright future there. I myself talk about my extensive career in a broad education industry and being an educator. I have been into this industry since last almost 20 years. I started my career way back in 2005 with a company, local company in Indore, where we started guiding students for achieving their goals abroad for higher education. Later, after having extensive experience, I started my own company where you are sitting today, Global Education, in 2014, and it's been 11 years as we are speaking today in June 2025. We have been into many tie-ups with the global recognized agencies and been awarded the best broad education consultant in the Central India by the philanthropist Mr. Sonu Sood. I would definitely try my level best to help you in and out, day and night, to make your dream come true. And now I would like to invite you to further go deep into my counseling session for your respective choice of country. Thank you so very much. हेलो फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छा ऑप्शन चूज़ किया है जर्मनी जाने के लिए फॉर योर स्टडी अब्रॉड पर्पस. नाउअडेज पीपल आर हैविंग वेरी मच इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज एज वेल. इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि लोग चाइना, लग्जमबर्ग जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पर इंटरनेशनल एजुकेशन का आज तक कोई इतना कोई रेपुटेशन नहीं है, यहाँ कोई ऐसा रिकॉग्निशन भी नहीं है, उन कंट्रीज़ के अंदर भी जाके अपना एजुकेशन कर रहे हैं. खैर, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा जर्मन इकोनॉमी के बारे में. जर्मन इकोनॉमी इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसके अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज जो जर्मनी के अंदर ऑपरेट कर रही है और वर्ल्ड वाइड जो डोमिनेट कर रही है. जैसे अगर हम जर्मनी की बात सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स, ओके. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड जैसे मर्सिडीज, स्कोडा, वॉक्सवैगन, BMW, इन सब कंट्रीज़ के इन सब कंपनीज़ के नाम आते हैं. इसके अलावा अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो दुनिया जो है वो जर्मन टेक्नोलॉजी एंड जर्मन हेल्थ केयर एंड जर्मन मेडिसिन के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है. सो एज फार एज जर्मन मेडिकल जायंट्स आर कंसर्न, ब्यूरर का नाम आता है, बायर का नाम आता है, सिमेंस का नाम आता है, जो कि दुनिया भर के अंदर बहुत सारे जर्मन मेडिकल, बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एज वेल एज मेडिसिन, वैक्सीनेशन, एवरीथिंग ये लोग प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो सैप, जो कि IT की बहुत बड़ी कंपनी, दैट्स अ जर्मन कंपनी. बॉश, जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो जर्मन कंपनी है. इसके अलावा अगर हम एक और कंपनी का बात करें जो कि है निविया. निविया भी इज जर्मन ब्रांड जो वहाँ से ऑपरेट करता है. एंड हेटिच, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, जिसमें अभी रोबोटिक्स आर्म के अंदर भी यूज़ हो रहा है, हार्डवेयर के अंदर भी यूज़ हो रहा है. एंड दे आर वर्ल्ड लीडिंग इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर विद गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. So due to all these technical giants based in Germany and operating from Germany are contributing towards the German economy, and that is the reason Germany का population है सिर्फ 9.5 करोड़. अभी आप दुनिया की 4-5 बड़ी बड़ी इकोनॉमीज की बात करिए. लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दी अमेरिका. अब अमेरिका पॉपुलेशन क्या है आप देख लीजिए. दूसरे नंबर पे है चाइना का पॉपुलेशन 160-170 करोड़ है. थर्ड पे है जो है वो जर्मनी का पॉपुलेशन. बट आप डिफरेंस देखिए, कहाँ 150-160 करोड़ की बात कर रहे हैं हम चाइना के अंदर, एंड सिमिलरली अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो पॉपुलेशन सीधा ड्रॉप होता है 9.5 करोड़ पे. तो 160 करोड़ लोग मिलकर के अपनी कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो सेकंड नंबर पे है. बट उसके जस्ट नीचे थर्ड लेवल की कंट्री जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 9.5 करोड़ है. एंड इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो वी आर फोर्थ एज वी आर स्पीकिंग टुडे. हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, बट हमारा पॉपुलेशन 150 करोड़ है. ओके, देयर पॉपुलेशन 9.5 करोड़ रुपीज, 9.5 करोड़ पीपल. ओके, सो देयर कंपनीज आर मोर प्रोडक्टिव टुवर्ड्स द नेशन, द पीपल आर मोर एफिशिएंट, पीपल आर मोर प्रोडक्टिव टुवर्ड द नेशन. इसकी वजह से जर्मनी दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इफ वी टॉक अबाउट द नॉमिनल GDP पॉइंट ऑफ व्यू. I would try that today's counseling session becomes a life changer for you, and we can provide you a launchpad for your successful career. With this hope and pray, let us start today's session about your desire of studying a master's program in Germany. जब भी हम जर्मनी में एजुकेशन की बात करते हैं मास्टर्स लेवल पे, तो वी कम अक्रॉस विद 2 ऑप्शंस. ज़्यादातर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, देयर आर 2 ऑप्शंस. क्या हम जर्मनी में स्टडी करें, या जर्मन लैंग्वेज में स्टडी करें, या इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी करें. यस, देयर आर 2 ऑप्शंस, जर्मन टॉट एंड इंग्लिश टॉट.
If you're talking about German taught program at master's degree, almost 100% programs are available in German taught as well as in English taught. दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है. फर्क सिर्फ इतना सा है that probability of getting admission into a English taught master's program are comparatively lesser than the probabilities of getting admission with a German taught master's program. Now I'll tell you why. As I said, and you heard it before, that Germany is the third largest economy in the world in terms of nominal GDP, and they are home to some world-class companies, manufacturer, electronics giants, medical research and innovation. They are at forefront, and a very forward-thinking education and innovation system, and that is Germany. Okay, because of that reason, पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से the good talent after America, United States, or along with United States, very similar, they are wanting to go to Germany for their higher education. इस वजह से होता क्या है, the amount of competition, the level of competition rises, and the opportunity for average student and just above average student for studying in English medium becomes difficult. Solution कैसे करें? There are a number of options that we are going to discuss. First, let us talk about studying in German taught, that is Deutsch language. German taught में आपको कैसे पढ़ना है? मिनिमम आपको C1 लेवल का लैंग्वेज अचीव करना है किसी भी हालत में. टू अचीव C1 का लैंग्वेज का लेवल यू नीड मिनिमम 18 मंथ्स 20 मंथ्स प्रिपरेशन, जिसके अंदर आप 5 लेवल, जैसे मैंने 6 लेवल टोटल है इसके अंदर जर्मन लेवल के, A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2. मिनिमम हमें B2 तो बहुत नॉमिनल है, बट C1 हमें चाहिएगा फॉर जर्मन टॉट. अगर C1 आता है हमारा इन 18-19 महीने की प्रैक्टिस के बाद में, वी कैन इजीली गेट एडमिशन. इवन इफ यू हैव अंडर ग्रेजुएट मार्क्स ऑफ 55%, यू विल बी एलिजिबल एंड यू विल बी एबल टू गेट द एडमिशन एट अ पब्लिक डच पब्लिक जर्मन यूनिवर्सिटी फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम. नहीं करना है सर, इतना टाइम नहीं है, 20 महीना नहीं खराब कर सकते, इतना मेहनत करना है, बहुत लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ट्यूटर प्रॉपर नहीं है, जर्मन लैंग्वेज नहीं है, वी हैवंट हर्ड अबाउट इट अर्लियर, डोंट वांट टू स्टडी इन जर्मन लैंग्वेज. ओके, we have a solution. You can go for master's program that is fully taught in English, unlike bachelor's program. Bachelor में होता क्या है, 95% program that are taught in German universities are German taught, not English taught. Okay, but fortunately at master's level program, almost 90% program, 85 to 90% program, you will find in English taught. You will find almost 95% program in German university in English taught. So not a problem. देर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो आपको समझनी है, जैसे कि आपके अंडर ग्रेजुएट के अंदर मार्क्स ट्राई आपका 75% के ऊपर हो. अगर कम है तो मैं आप पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कंसल्ट करें, आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट. बट बेसिक रिक्वायरमेंट नंबर 1 75% प्लस, IELTS 7.0 7.5 का स्कोर आपका हो, दैट विल बी वेरी गुड, बहुत हेल्पफुल रहेगा. 75% मार्क्स 7.5 इन IELTS makes a good case for German. We have got lots of university option, like if you talk about top notch, जो सबको बीमारी होती है स्टूडेंट्स को पूछने की रैंकिंग की, yes, AIWTH Aachen, TU Munich, TU Berlin, all these top notch options are available. But I would recommend just divide the choice of your university in 3 categories: ambitious, desirable and gettable. I always say to my students, US, Germany and Europe, all three places, my common lines. Now make a good mix of university which are basically divided into 3 category. एक तो है ambitious, TU Munich, TU Berlin, AIWTH Aachen, जब हाई क्लास, इसमें अप्लाई करो, बिल्कुल अप्लाई करो, एप्लीकेशन फी पे करो और अप्लाई करो, आई डोंट माइंड. उम्मीद मत रखो एडमिशन आएगी, बिकॉज द कॉम्पिटिशन आर रियली हाई, एंड एज आई सेड, talent from all over the world come to Germany and seek German quality of education and German quality of life. Hence, competitions are really high. करें क्या? करिए ये कि 75% मार्क्स कोशिश करिए, अगर 7 सेमेस्टर में है तो उसे 75 तक करने की. 7.5 IELTS लाइए. इंग्लिश टॉट में मैं आपका 100% एडमिशन करा के दूंगा. इफ इट इज लेस, इवन talk to me. We have certain universities where admission is possible with even lower grades. मतलब lower means not 55-60, of course 70, between 70 to 75.
थोड़ा सा और कम है, प्लीज टॉक टू मी, आई विल गिव यू द ऑप्शंस. Now talk about universities. All University of Applied Sciences, Brandenburg Institute of Technology, Brandenburg University of Technology. Then comes Osnabrück, Chemnitz, Constructor. All these options are available. Stuttgart, all these university options are available. इसमें हम कर सकते हैं apply. We always try to make a list of 12 to 15 यूनिवर्सिटी, 20 यूनिवर्सिटीज, जिसके अंदर से 3-4 एम्बिशियस, 7-8 डिजायरेबल और 8-10 गेटेबल यूनिवर्सिटीज हो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपका कम से कम एक जगह से एडमिशन श्योर हो. ओके, नाउ मैं आपको एक चीज बता दूं दैट अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू कैन नॉट बाय अ सीट बिकॉज देयर इज नो फी इन जर्मनी. हियर द एडमिशंस आर गिवन on the priority of the university, not on the priority of the students. America, Australia, Canada, UK, give a shot, pay the fee, get the university you want if you have the good profile. In Germany, even though if you have 90%, 95%, I will be able to deliver around 85 to 90% to your choice, because education is free, they are not charging you. Hence, there will be no seat compulsion here. Apply on time, bring all your documentations. APS is an integral part. आपको पता है APS के बारे में. APS is the credential evaluation of your academics and your IELTS. ये जर्मन गवर्नमेंट का सिस्टम है. ब्लॉक अकाउंट के बारे में आपको पता है? नहीं पता? I'll tell you about the block account. जर्मनी जा रहे हैं तो you will have to compulsorily open a block account. Block account means German government says that if you are coming for an education purpose, just open a bank account with 11,904 euro in that account, paid upfront, prepaid. And once you reach in Germany, you can start disbursing 1,000 euro approximately per month. This particular thing is in place to make sure that you have remaining amount of living expenses along with you, and you are not burdened on the public funds in Germany. As I said, admission के लिए there are certain criteria. IELTS 7.5, 7 हो बहुत अच्छा है, और ज़्यादा हो बहुत ही बढ़िया है. 75% aggregate marks in your bachelor's or 70% in your bachelor will be a good choice, will be a good position to be in. And then of course our expert guidance, which involves writing statement of purpose, writing motivation letter, writing the your inclination letter, making your Europass CV. Don't make any other altu faltu wala SOP. Here you will have to make a proper Europass CV that our expert team will help you how to build that as per the European standards. That's called Euro CV, Europass CV, that will help you to get. Now, if you are going to Germany, block account is something which is very necessary. So if you don't have money to pay for your block, we have tied up with lots of banks and non-banking financial corporation like Bank of Baroda, Auxillo, Avance, Credila, and all these companies. Apart from that, some other nationalized banks also through a DSA, of course, and they help you to get loan even for your block account. आपका block account का पैसा भी बैंक दे देगा, because banks and financial institutions believes in German education system. उनको पता है बंदा जर्मनी पढ़ने जा रहा है, block account का पैसा मांग रहा है, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी एजुकेशन खत्म करेगा और इजीली अपना ब्लॉक भर देगा. So friend, this is about studying in Germany a master's program, but आप सबको एक चीज तो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी एंड आपके दिमाग में आपको घुसानी पड़ेगी. Going to Germany for higher education at master's level or even a bachelor's level. Let us talk about masters because I'm addressing this session for the masters only. That you will have to be flexible here. Flexibility is the key. You cannot say that I only wanted to go for, let's say, construction project management. Okay, if you're interested in construction project management, we might end up with getting admission into civil, architecture, construction management, project management, or construction project management, business information modeling, or the construction real estate management. All these programs will be able to talk about. We should be able to talk about. You cannot only pin your finger that मुझे यही चाहिए, because as I repeated 2 times, 3 times in fact, Germany providing free education, there is no fee for the course. So you are not a selector here. German universities having budget from the federal government, and in order
to fulfill their obligation towards the German government and the German economy, of course the German Chamber of Commerce and everything, they know that which kind of candidates they need. Every university are having a different pool of candidates, and everybody has given different responsibility of recruiting certain students and training them for the German economy and for running the German financial system and the manufacturing system, or you can say the production system of the country. So let's say if all University of Applied Sciences has a good budget for IT professionals, so might be possible AIWTH is not having a good budget for computer science, they are having budget for mechanical, so they will select you. Computer engineers, IT, all will select you. Osnabrück will select biomedical engineering students. Chemnitz will select the people coming from the commerce background. So accordingly you will have to adjust. But there is a good news. After completing your first semester of first year, let's suppose by starting your course from India, if you have not received your desirable university, so what you can do is, after reaching there and studying first semester of your education or first year of education, once you will be having a German qualification in hand, you can change the university to your desired university by applying again. At that time, we will help you. 6 months education is already there as per German standard. 1 year education is already there for German standards. Okay, no problem, no worries. Next year, again, get admission into your desired university. आपको लगता है भैया फ्रैंकफर्ट जाना है, बर्लिन जाना है, म्यूनिक जाना है, बर्न जाना है, जाइए in your second semester or second year, because at that time you will be having and you will be dancing on an advantage of having a German qualification in hand, which right now you do not have. And after even first year of undergraduate degree, you must be having good access to German level language also. So that will also play a crucial role. That way you will be eligible to apply and for yourself for a master's program at your desired university, even if you are not getting your desired one from India. But let me tell you, I will try my heart and soul, won't leave any stone unturned, making your dream, your desire, your choice comes true to studying in a fantastic, fabulous public state German universities in Germany in the coming session. So, if you are capable and ready to take the challenge, get in touch with us. Our expert team would happy to help you and every step you take to get further education in Germany or around the globe, specifically Europe, Australia, Canada, UK, US, New Zealand, and some good European countries like Norway, Denmark, Sweden, Germany, France, and Luxembourg. Over to you now. Decide, meet my team here. They'll help you. If you have any questions, shoot us. We would love to answer all your queries, all your questions, and make your dream of studying in Germany come true. So guys, this is Johar Ali signing off. Goodbye. Thank you very much. Thank you so very much again for listening to me passionately. Thanks for your time. Thank you for coming out today and eliminating your precious time. I hope you must have learned some new things from my counseling session and would definitely give me a chance to serve you in your vision and your desire of making a fruitful and a happy and a joyful career abroad. Thank you very much. God bless you. Goodbye.